this is a delicate point because children, they do not know what they want. They are exploring. And you might remember that when children are very young and you ask them, what do you want to become? I want to become a bus driver, or I want to become a pilot, something like that they will say, because that has impacted their mind. Now, if at this point of time you say, well, children, they should be allowed to, do whatever they want, and you get is it beneficial for the child? No. But at the same time, if you start projecting your hopes, your desires, your ambitions on the children, then the child is going to get smothered. Its creativity is not going to come out. So again, there has to be a good give and take. A child is not independent on its own. It slowly becomes independent. It needs to understand, explore. So like when you first put in a sapling, that sapling cannot take any nutrition on its own. So you need to put a lot of nutrition, you need to cover it. Oh, there's going to be too much of sun. So you give a shade. There will be, you need to protect the sapling. But as the sapling slowly and slowly and slowly develops its own roots, then slowly and slowly you need to give less and less protection from outside. In the same way, we have to enable, empower children to give and create their own roots. And that is the responsibility. As the roots are coming, many years ago, I had been to that botanical garden in Kolkata, where there is that huge banyan tree. And over there, you know what they do? As the roots start coming down from the banyan tree, they cover it with bamboo. And I said, but why are you doing that? Then the botanist over there told, Swamiji, due to wind, the roots, they can get entangled. And once they get entangled, then after some time, they cannot really go down and they do not perform the function they are created for. That the tree gets extra support at multiple places. So we put the bamboo so that the root grows vertical and it reaches the ground. Once it reaches the ground, we take the bamboo away and then the root starts supporting the tree. And that is how the tree can last longer. This is what we need to do with our children. And yes, we are going to project our hopes, our desires, but that is how progress always happens. We are the products of our parents. We have not got our DNA, from our laboratory where we have gone and made customized DNA. No, we are a product of our parents. And there is also some karmic linkages which come to us because of that. So like it or not, we impact and we affect the children. But the beauty is when we make a change in ourselves, that change is felt by the children like this. Then we don't need to tell them so much. Please don't lie. Please don't do this, that, the other. When I stop lying, I start living the life as I know is correct. And I start glowing. Children automatically emulate us. So I think what is most important is that we start developing that clarity for ourselves. Like they say, when you go through a flight,
the flight attendant says, if the mask comes down, first apply it on your mouth before helping others. If you don't apply it on your mouth, you're not going to be able to help others. So first apply it on yourself. When I apply it on myself, then I experience it. Then I experience the tussle, the tumult, and I overcome it. Then I come to know, oh, this is how it can. Then I develop greater understanding for others. Then I am able to actually transmit to others. If I try to transmit to others without internalizing and experiencing that myself, then it is not going to stick. It will just flow. There was a story of, this story is used for multiple people, but this was spoken about Sant Tukaram. There was a young child, and its grandmother brought the child to Sant Tukaram and told, Maharaj, please tell this child, he keeps on eating jaggery. Day in and day out, he keeps on eating jaggery. He doesn't eat anything else. So Tukaram Maharaj says, oh really? Acha, my dear, do you eat jaggery? Yes, 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 I like jaggery a lot. Do you eat? So then he looked at the child, looked at the grandmother, smiled and said, okay, come in 2 weeks. So the grandmother felt, okay, now Maharaj is doing some jadoo, is doing something. So she took him away, came back after 2 weeks. After 2 weeks, the same thing. Gazed at him longer and said, come back after 2 weeks. After 4 or 5 such trips, then Tukaram Maharaj told that boy, my dear, it is okay if we don't eat jaggery. It's fine. Don't worry. The grandmother was like totally angry and upset. If this is all what you wanted to tell, why did you ask me to come so many times? You could have told it the first time itself. Everybody knows about it. He smiled and looked at the grandmother and said, Ma, I myself eat jaggery a lot. I love jaggery and I keep eating it multiple times a day. So when I'm eating jaggery, how can I tell him not to eat? So I first stopped eating jaggery and observed, saw that yes, it is fine. It is not a problem. Everything is going well. Once I have experienced that, then I told him. And sure enough, the child left. It was not what he told, but who told, because this person had experienced it. That is what we as parents need to do. We need to experience things and share our experiences. And as far as parenting is concerned, there is a shloka. Lalayet panchavarshani, dashavarshani tadayet, prapte tu shodashe varshe, putram mitravadachari. For the first 5 years of the life, nourish, nurture, pamper the child. Dashavarshani tadayet. Now, tadan means beating, but it does not mean you keep on whacking the child left, right, and center. It means regulate. No, don't do this. Yeah, you must do this. So you are regulating that child for the next 10 years. Prapte tu shodashe varshe. When the child becomes 16, putram mitravadacharet. Establish the bond of friendship with them. But for that, first 15 years, you need to invest. This is a long-term investment. We bolte hai na, short-term investment, medium-term investment, long-term investment. This is the long-term investment we are making. Now, if I have not made the first installment and the second installment of investment, and then I don't make the third installment of investment, if you expect children to grow up nicely and, no, that should not happen. This is what is necessary. So you
apply that in your life and take that sankalpa as a mother. Take the sankalpa that I would like to become a source of inspiration for my children, which I would want them to do ABC, whatever. So you are making changes in yourself, and that energy which comes within you is going to transmit all around. And when that energy transmits around, then automatically, without speaking, the difference, the change starts taking place. I think that is what we as adults need to do. नहीं, जो घटना एक बार घट गई है, उस घटना को आप दोबारा जी नहीं सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन घटना से जो सीख हमको सीखनी थी, वो तो हम सीख करके अपने जीवन में जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमको कॉलेज में पढ़ाई करनी थी जी, कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए, हम एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं मिले, उसके चलते हमको जो स्ट्रीम चाहिए था वो नहीं मिला, या जिस ऊंचाई तक जाना चाहते थे वो नहीं पहुंचे। हाँ, तो ये एक अनुभव हो गया जी। लेकिन अगर आप केवल इस अनुभव को लेकर के रह जाएंगे तो उसके नीचे उसका जो सूक्ष्म तत्व है उसको आप भूल गए। आपने ये जो अनुभव में ये जो कमी आ गई, वो क्यों आ गई? क्योंकि आपने आपका लक्ष्य निर्धारण ठीक से किया नहीं था। लक्ष्य निर्धारण करके उस पर आप अभ्यास नहीं किए थे, उस पर मेहनत नहीं किए थे, ये आपकी कमी रह गई। मतलब ये हम एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। जी जी, व्यक्तिगत आपको नहीं बतला रहे हैं। जी जी जी। तो जो ये आपकी कमी रह गई, जैसे आपने बोला कि एक बार मेरी एग्जाम हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस अनुभव से आप सीख तो सकते हैं, क्योंकि जीवन पल पल परीक्षा देता है। और वो अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी भी तो वही बात हुई ना, दिए नहीं पास किए, एनडीए में पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो जान देने के लिए तुले थे। उनकी किस्मत अच्छी कि वो स्वामी शिवानंद जी को मिले और जान देने के बदले जान उनकी निखर गई। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, वो अनुभव से वो सीखे कि अरे, जब मैंने कोई लक्ष्य निर्धारण किया है तब उस लक्ष्य पर मुझे जी जान दे करके मेहनत करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, में नहीं किए, गए स्पेस में, और उस अनुभव के बदौलत उन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति करते गए, प्रगति करते गए, प्रगति करते गए, और जीवन में एक मिसाल स्थापित कर दी। आज अनेकों सहस्र बच्चों को, युवाओं को, प्रौढ़ों को वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए। तो वो जो अनुभव था जिसमें हमने फेल कर गए, वो फेल्यूर से हम सीख करके जीवन में पास हो गए। ये तो हम कर सकते हैं, नहीं? ये हम करना है, इससे पता चलेगा। और ये अनुभव बच्चों के साथ बांटना है, उनको जबरदस्ती नहीं। अब देखिए, एक उम्र होता है जब उनको हमको एक दिशा देते जाना पड़ता है, जैसे वो जो पेड़ का जो जड़ आ रहा है नीचे, उसको हम दिशा देते जाना है। लेकिन अगर वो उसको बांस में बांध करके ही रखेंगे तो एक समय के बाद वो पेड़, उसका जड़ वो बढ़ेगा नहीं, तो वो मजबूत बनेगा नहीं। तो हमको उसको एक दिशा देने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कब लगाना है, कब निकालना है, वो भी समझना जरूरी है। और नहीं तो पता चला अंदर में वो जो जड़ है घुट घुट करके सूख गया। तो ये जो है ये सीखना पड़ता है, और हमको बच्चों के साथ अपना अनुभव सही समय में बांटना है कि देखो
हमने ऐसी कमियां की, हमने ये किया, और हमारी मेहनत से आज आप लोग इधर में हैं। यहां से आपको आगे बढ़ना है। आपके जीवन के जो लक्ष्य है वो मेरे जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। अगर आपके बच्चों के जीवन के लक्ष्य आपके लक्ष्य बनेंगे तो बच्चे आप बन जाएंगे, मतलब आउटडेटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे। 1947 का जो मॉडल है वो 1950 में आउटडेटेड हो गया, 1960 में और आउटडेटेड हो गया, 1990 में एक्सपायर कर जाता है। अब वो 1990 में 1940 का मॉडल चल रहा है, काम नहीं बनेगा। लेकिन वो तत्व जो है तो हम सीखे इन चीजों से, उसको हमको आगे देना है। तो उसके लिए हमको एक आपस में कंटिन्यूटी और एक कंड्यूइट तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चों के साथ में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते। अपनी भी कमी होती है, समाज की कमी होती है, बहुत सारे चीज होते हैं। दोष नहीं दे रहा, विश्लेषण कर रहे हैं। हम लोगों को इसको समझना चाहिए। और एक चीज बच्चे भी जानते हैं और बच्चे भी बहुत समझते हैं, और जब हम एक प्रामाणिक प्रयास करते हैं बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं, और वो उनके जीवन में एक बन जाता है। देखो, पापा को इतना इतना सब था, उसके बावजूद वो ऐसे किए, क्या बात है, मुझे पापा जैसे बनना है। हम सोचेंगे मैं तो जीवन में कहीं नहीं रहा, लेकिन बच्चों को हम में एक गुण दिखाई देता है और वो गुण से वो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को बच्चों को वो तत्व, वो प्रिंसिपल्स सिखाते जाने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में प्रगति करें। कि आखिर बच्चों को 10 साल 20 साल की उम्र तक आप बोल सकते हैं सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, फलाना मत करो, ढकाना मत करो। उसके बाद में बच्चा तो अपने मन से जाएगा। एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं जिसको आप कोई बुरा ना माने। अब हाल में एक अनुभव हुआ था, एक लड़की दूसरे लड़के के साथ चली गई, बंबई से थी, दिल्ली चली गई। पिताजी उसको टोकते गए, रोकते गए। वो बोली मैं तो अभी बड़ी हो गई हूं, मैं खुद के निर्णय खुद ले लूंगी, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। निकल गई। क्या हादसा हुआ सब लोग जानते हैं। तो इसका हम लोग को विश्लेषण करना है कि पिता अपने अनुभवों को बेटी तक पहुंचा नहीं सके। वो बोलते रहे लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हुआ था। बच्ची ने वो अनुभव से सीखा नहीं। कभी कभी तो देखो, हर एक व्यक्ति का कर्म होता है, तो हम तो सब चीज नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसमिशन जो है ना, वो ट्रांसमिशन के लिए हम लोगों को बचपन से जड़ बनाना पड़ता है, और वो एक समय की बात होती है। जब हम वो करते हैं तब पल्लवित होता है, लेकिन जब हमको पता चल जाता है तब से शुरू करेंगे तो धीरे 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 जड़ फैलना शुरू हो जाता है और आश्चर्य बन जाता है। कभी भी लेट नहीं होता है। देयर इज इनफ टाइम, इट इज नेवर टू लेट। एंड बिकॉज you have your karmic balance, your child has your karmic balance, has its own karmic balance, doesn't have your karmic balance. आपका डीएनए आपके बच्चे के पास गया है, लेकिन उसका कर्म जो आया है वो कहीं और से आया है। तो थोड़ा आपकी तरफ से है लेकिन बहुत सारा बाहर की तरफ से है। तो उसका जीवन अपना जीवन है, उसमें आपको कुछ कुछ देते जाना है और फिर उसको अपने से सीखना है। ये करने के लिए हम लोगों को धीरे धीरे बच्चों में बचपन से इन पॉइंट्स को देते जाना पड़ता है, और फिर फर्क पड़ता है। और जहां नहीं हुआ है, जब हमको पता चल जाता है, तब अपने में बदल लाना शुरू कर लीजिएगा, दूसरों को मत बोलिएगा। जब हम अपने में बदल लाना शुरू कर देते हैं, 6 महीना साल भर के अंदर आप देखिए बच्चे पकड़ लेते हैं। वो अनुभव
हमारे कमियों का बच्चों को देने के तरीका यही है। हम अपने गलतियों से सुधरते जाएं और सीखते जाएं और संभलते जाएं, बच्चे अपने से पकड़ लेंगे।